will continue with the we'll go for array. array खोल रखा नहीं modify में array एक मिनट इससे खोल लेते हैं. अच्छा I open draw modified array. Let us see what is array. By array you can copy an object either in a regular spaced rectangular or polar fashion. Right? In a rectangular fashion means in a grid type with having columns as well as rows. And polar means along a circular or a circle, imaginary circle, it may be imaginary circle or like that. In this case, this is the example of chairs, which you can see in red and in black. The black is the first object, which is arrayed and in a rectangular fashion, right, with 2 rows and 3 columns. And in the second case, near the circle, it is that the object in the black is copied in polar fashion, right, and the angle of fill is 135 degrees. So 2 objects are placed, right. The command is array, and let us see what we get when we give the command array. This is displayed, right. The fashion of it, either rectangular or polar or the path. You can array along the path also, but it is different, so we'll explain it later. This is another example. If you see the left hand corner item, this is the base point, and here this object is the yellow one is copied in the right hand case, this side, in a polar fashion with number of items as 1, 2, 3, 4, 5, right. So total items 6. In the lower base, you can see this number of, if this item is copied, the number of items is increased, but the angle of angle is only 180 degrees in both the cases. So this is the difference when you give the number of items, the spacing. Yes. Polar array, right. This is how it is done. Everything is drawn in counterclockwise direction. You can use it by gripping also the item, select the item and then array it. These are the already in that is the case which we have already mentioned, same thing. In 2D, it is the number of it copies the number of items, which is around 1 lakh, right? In a single command it can be. And this is the maximum errors, 2 lakhs can be copied by a single command.
Now let us see with the help of a command. Right? First we make a rectangle. Five comma five. Go to the rectangle command. Hang हो रहा 90 है मिस नहीं सर ये hang ये देखो अच्छा pick first point then ये फिर अभी ये रीजन कर दो नहीं सर hang एक बार बंद करके चलाना पड़ेगा the system is hang AutoCAD is not working actually so we just AutoCAD सर AutoCAD hang हो जाता है एक बार बंद कर Now take a rectangle command first point, then second point 5, 5. Now use a rectangular. First we give a line weight. Now we use a array, go modify command, go array, we use a rectangular fashion in array, rectangular, go to the rectangular array, select the object, enter. Now change the number of rows, click on row, change it, going to the row is 2 and the spacing between the row is 10. Now enter. Now change the number of column, click on number of column or write COL, enter. Change the number of column into 6 and spacing again change 10. For acceptance, enter. Now we accept the rectangular array. We use, this is a rectangular array, one more command, that is classic array. Those people who are using AutoCAD old to previous than 2010, they use classical array. In here also array classical. Write array classical. This is the old fashion of array. In this rectangular and polar. Select object, enter. Select number of offset between the rows. I give it 10. Number of rows 2. Number of columns 6. And the distance between column is 10. First preview, then
enter to sept. Now we use polar array for draw a circle. For polar array, go modify command, go array, go polar array, select object, enter, select base point, then select number of items. We go to the 3, then select the angle between, that is 30, or total fill angle. Here going to, if total fill angle is 360, then it again change. Now the spacing has changed. No, This is the placement. this is a placement. It's a number of item and angle between two items or two items, and fill angle. Fill angle is a whole angle. If we increase the number of item to 6, now it's work according to a fill angle. If we change the angle, then it's a angle between two items. Let us give 270 instead of 360. Let us give 270. 270. Let us see the change. Now for 270 it will change. ये आपको यहाँ से ये गैप आ रहा है, तो उसने यहाँ से एंगल लिया, यहाँ तक 270 तक ही फिल किया. Or if you give the angle 180 degrees, then it will again, you can see the change. See, now they are spaced. Okay? Closely. Now third array is a path array. I take one spline, go to the modifier dimension and go to the path. First select object, then select the path. In here also we change the number of items. Distance between item can be changed into 20. Number of item going to 7 to 6. This is a array in a path fashion. Now we do some example on array. Exercise. We do this exercise with the help of array command. First we make a first circle. The dia is 1.125. After that we go to the second circle, dia is 1.75, and after that we make other circle, dia is 3.25. Go to the circle command, go draw.
एंटर। हमने अभी सेंटर रेडियस वो किया है, सिलेक्ट किया है, बट हमें डाया चाहिए, देन डी एंटर, एंटर, एंड द फर्स्ट डाया इज 1.25, then dia 1.25, enter, Z enter, A enter, and after that again Z enter, E enter, extend command. Now our second dia is 1.75, T enter, 1.75, enter, and the third dia for this circle is 3.25, C enter, specify center, D, the dia is 3.25, enter. Now, can we edit the diameter of any circle which is already drawn? Yes. First go for the properties. Now we are changing the diameter of the circle which we have already drawn. Okay. Yes, you can use the grip. We have you can see the grips with the blue colors. We can change with the help of grips, or we can change here. Our diameter is 3.25. First we right click, go to the properties. Sorry, right click on toolbar and go to the property toolbar, और या फिर शॉर्टकट है MO एंटर, प्रॉपर्टी टूल बार ऑन हो जाएगा। सिलेक्ट कीजिए जिसको हमने चेंज करना है, उस पे उसका डाया आया हुआ है, डाया को ये 3.25 है, इसको हम 4 कर देते हैं। Property of all the three circles here? No. Which one? We have to select then properties. Go to the properties. Again we go to and change. Here is 3.25. And now we take take fourth circle. After that we take arc and trim or array. The dia of fourth circle is 4.45. Now enter. Now we can see these are look like a polygon. Then we use a one more command, that is region command. It set the pixel. The full name is regenerate, but we write REGEN. Enter. It will set the pixels. Now we use a offset command. First I draw a line at quadrant
because here in diagram, that is two units from center line, we make this with the help of from command, or one another command is offset command. The shortcut of offset is O enter. After that, the distance is defined, enter 2, select the object, select the direction. If we want upper side or lower side. This is the offset command. Now after that, go to the draw and draw array. Start and here we use start and radius. Again, I select the start point wrong side. It shows start and radius, it shows downward. If we select start this side and this side, start this side and then this side, then it will mirror image to this. Draw arc, start, this is a start point, this is an end point. Now arc is making this, and here we needed to radius. Go and check the die is 1.75. Now write the radius 1.75 and enter. After that, trim. First select, erase the line and go trim command, TR double and TR enter, select all. Now we use polar fashion array. Go the array command, polar array, select the object, enter, select the base point. How many array we need it? 4. Then change the number of items into 4. And check the fill angle is 360. Sometimes it's look like a full array, but the angle is differ. Check 360, then OK, then accept. Now use again, go to the modify command and use trim. Select all. After that, we are going to make this circle. The angle on this line is 45. Select the center point. Draw a line with the help of polar system at the rate. Our length is 2 less than sign 45, enter. Now our dimension is less. Then we use lengthen command or extend command to extend this, or remade this line. Again L enter, at the rate length is 4 less than sign 45 and enter. Now make a circle here. Go the circle command. Select this point. Go snap, setting,
clear all, select intersection, select this point and select the radius. In here the radius diameter is 0.5. 0.5. Now D enter 0.5. Now again we make a array, a polar fashion array. First go to the polar array, select object, enter. After that select base center point for array. Now change the number of item into 4. Again check the fill angle 360, enter and accept. Now this sketch can be completed. Now we make one more sketch. बता दिया डिग्री वाली लाइन हाँ जी वो लाइन भी साथ में आएगी उसके कुछ उसमें आ रही है ड्राइंग कौन सी लाइन एक्सटेंडेड है दिस वन इज एक्सटेंडेड वो डायमेंशन लाइन से ना उसकी वो तो हमने सिर्फ वो बनाने के लिए दी थी उसको डिलीट भी कर सकते हैं वो बाद में डायमेंशन लाइन ली यार अभी आगे एक लेक्चर आएगा जब लेयर्स का नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे तो उसमें इसको कैसे सेंटर लाइन में चेंज करना है वो सारा कुछ उसमें बताएंगे ठीक है अभी हमारे पास कुछ एक्सरसाइज और रह गई वो भी अभी करनी है एक्सरसाइज 8 This is a simple example of from command. First we make rectangles, lines. Now how we make circles with the help of from command, or we use offset command. Select all. Key enter. Here it is. Now I repeat the offset command. जो अपने सर्कल्स बनाएंगे ना वही बनाओ ऐसे 2 मिनट से बन जाएंगे सिर्फ सर्कल तक बनाना बाकी क्या छोड़ दो उसकी सिर्फ डायमेंशन बताओ Now we make this first we with the help of offset command, then we make with the help of from command. For first we make a rectangle of 4.5 length and 3.25 height, or 4.5 in x and 3.25 in y. First go rectangle command, first point, add the rate. In x we are going to 4.5, comma in y we are going to 3.25, enter. Now if we offset this rectangle
O enter, select, select 2, हम 1 सेलेक्ट करते हैं। ऑफसेट के लिए कितने डिस्टेंस का ऑफसेट करना है, इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते हैं, तो ये एक वन पार्ट, एक यूनाइटेड पार्ट ही ऑफसेट हो पाएगा, या तो बाहर की तरफ हो पाएगा या अंदर की तरफ हो पाएगा। ठीक है, तो हमें अगर इससे ऑफसेट करना है तो एक इसके ऊपर एक लाइन बनानी पड़ेगी, फिर उसका ऑफसेट होगा, और फिर हम एंड में उस लाइन को डिलीट करेंगे। इस पहले हम इस मेथड से करते थे, अब हम फ्रॉम से करते हैं। तो पहले हम ऑफसेट से करेंगे, फिर फ्रॉम से करेंगे। इजी ड्राइंग। नाउ मेक अ लाइन here, offset, the distance is from above 1.25. if we make this point, this line from horizontal line, the distance is 1.25, ऊपर वाले का 1 है and इस साइड से 1 है। या नीचे से बनाना शुरू करें जहां से डिस्टेंस डिफाइंड है 1 1। चलो हम नीचे से बनाते हैं, इस यहां एक लाइन बनाते हैं, फिर उसको वो करते हैं। हमने एक लाइन बना दी यहां पे, ये वाली। अब इसका ऑफसेट लेते हैं 1, O एंटर, 1 एंटर, इस लाइन को सिलेक्ट किया, ऑफसेट ऊपर 1 ले लिया। इस लाइन का ऑफसेट और कितना है, 1। ठीक है, और जो अब हमारे पास ये लाइन बची है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 0.25। तो एक ऑफसेट ले लेंगे 0.25 पे। is 0.25, enter, select this line and offset. Now similar fashion we offset vertical. First we make a line on vertical, go offset. Here first we take the offset from, the distance is not given, the distance is from here is 1.5. in this not given, but distance is from here is 1.5, and from other side is 1. Offset O enter, then 1.5 enter, select the line, and here similarly make one line here and offset it. वैसे भी कर सकते थे। O enter, 1 enter, 1 यहां से, वहां हमें कैलकुलेट करना पड़ता, इसलिए मैंने डिलीट, सिलेक्ट, और ये जो हमने लाइंस बनाई थी वो डिलीट कर ली। एक और है पीछे वाले, ये मिड में है, तो हम यहां तो एक लाइन मिड पॉइंट से लगा देंगे। तो स्नैप सेटिंग, we make first circle, its dia is 0.5 है। C, select this, D enter, 0.5 enter, similarly circle, and the here select, and the dia is
1, D enter, 1 enter. Similarly, from here the dia is 0.75, 0.75, C enter, and D dia is 0.75. We make these points with the help of offset command also. Sorry, from command also. Here, first we make a rectangle at the dia is at the rate 4.5 and 3.25. 4.5, 4.45, comma 3.25. Now we made this circle. The dimension is, यहाँ से check कर लेते हैं, 2 होगी, वहीं से देखते हैं. The dimension is 2 in Y, 1 in X. Then circle command C enter, FRO from, specify the base point, then at the rate, no, our base point is here, 1 comma 2, enter, and the diameter is 0.5, D enter, 0.5, enter. Similar fashion we make this point. This is on the half. The half is half of 4.25, sorry, 4.45, 2.27, 2.27, in X 2.27, and in Y the dimension is 1. Again repeat the circle command and from FRO 2.225. हाँ जी, 2.225 center. We select the midpoint, then we no need to take the dimensions. We only want to move in the order. Okay. Select midpoint, At the rate then at the rate 1, 0, 1. 0, 1, enter. Now diameter is 0.75. For this point, the distance from this point is 1.5 and the height is 2.25. In here we use this point as a reference, and X is negative, Y is positive. Circle command from FRO, enter, base point specify. In X direction we go, first for relative we use at the rate minus 1.5. For above we use comma 2.25. Now the diameter is 1. Then D enter and 1 enter.
we make this diagram with the help of two methods, with the help of offset and from command. Now we make this diagram with the help of tangent. In morning session I give you a demonstration about a tangent, how we use a tangent in circle. In here we use a tangent in line, because this is tangent, not touch at point, any point, it's tangent and touching. First we make a base circle of radius 1, a center circle. Then radius is 1, enter. After that we make these two circles. First the circle of radius of 0.75, the outer circle, and offset from here is 2.5, or we can say we use the command from for this point 2.5. Go the circle command, take from command FRO, enter, center point, then add the rate 2.5, comma 0, and the radius of the circle is 0.7, 0.75, 0.75. Other side we make with the help of offset. Select the quadrants and make a line. Now use the offset command, O, enter. Now offset is 2.5. Select the line, make offset of 2.5. Now select the midpoint of this. First go the circle command, then select midpoint and make a circle of 0.75. We can offset the circle itself. Yes. If we can offset the circle, then how circle can be offset? I show here. Okay, that will be inner or outer. Okay. ये अभी मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, फिर उसका ऑफसेट करके देखेंगे. मिरर हो जाएगा सर. ऑफसेट नहीं, मिरर कर सकते हो. मिरर एरे कर सकते हो. मिरर अभी मिरर कमांड अगले लेक्चर में बतानी है, अभी मिरर बताई नहीं, तो इसलिए मिरर कर सकते हैं. ऑफसेट तो वो आउटर में ही होगा. Now we make a line tangent to both the line. Go to the line command, write here tan, enter, select this edge. Similarly write tan again and tangent this edge. Similar fashion we make all the other 3 lines. EA and tan. Now make inner circles. Make this circle of diameter 0.5
4, C, enter, take the last center point, and it's a dia or radius. Its radius is 0.4, then 0.4, enter. Similarly here, sorry, and the dia of this inner circle is 0.65. Radius is Sorry, radius is 0.65. 0.65. Now we use the trim command, modify, trim, select all, now our shape can be completed. Next is मिरर से बना देता हूँ 2 मिनट वेट अब करना मिरर कमांड कराएंगे, करा कल कराएंगे। वही करा देते हैं फर्स्ट हाँ जी, बंद हो जाएंगे। अच्छा अभी ब्रेक अच्छा वही करते हैं या फिर अभी करेंगे ये करना आगे कर लिए एक्सरसाइज। हाँ जी, हाँ जी। Now we go to the exercise number 9. इस एक्सरसाइज में हम एक सर्कल यूज करेंगे। सर ने पहले बात कर रहे थे, यहाँ बैठे थे, वो टेंजेंट रेडियस। इसमें हम टेंजेंट रेडियस से बनाएंगे और एक हम आर्क से बना सकते हैं इसको। तो हम अभी इसको फास्ट वे में सर्कल से बनाएंगे और वैसे आर्क से बना के देखेंगे। ये है हमारे पास यहाँ का, इस सर्कल का और इस सर्कल का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 3.75, वर्टिकल डिस्टेंस है 1.25। सो ये फर्स्ट सर्कल, इसको हम बेस सर्कल मान के बनाएंगे। इसका डाया है 0.5। First, specify the point. The dia is 0.5. D, enter, 0.5। और जो दूसरा सर्कल है उसका डाया है 0.75, बट ये एज हॉरिजॉन्टली हमारे पास है 3.75, वर्टिकली 1.25। तो हम फ्रॉम कमांड से यूज करेंगे, उससे करते हैं। C, enter for circle, FRO for from command, take a base point here. In X or in horizontal we go 3.75. In Y, करेक्ट। अब हम नेगेटिव नीचे जाएंगे तो माइनस लेंगे, -1.25, एंटर। अब हमारा रेडियस है, सॉरी डायामीटर है 0.75, डाया इज 0.75, डी, एंटर, 0.75, enter. Now
अब हम आउटर सर्कल बनाएंगे। इसका रेडियस है 1 और इसका है 0.75। सर्कल, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट and take the radius 1, enter. Second circle and the radius is 0.75, enter. Now we make these arcs, the radius is 4.655. We make these arcs first with the help of circle, then with the help of arc. Go to the draw command, go to the tangent radius, first tangent, second tangent, the radius is 4.655, right here 4.655, enter. Similar fashion we make here. Now हमने इसके इस पॉइंट को सिलेक्ट किया था और इसके इनर पॉइंट को, तो क्या हुआ, ये अंदर की तरफ बना है। अगर हम इसके बाहर वाले इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे तो एक आउटर शेप का सर्कल बनेगा। अगेन रिपीट, गो टू द सर्कल कमांड, टेंजेंट रेडियस, फर्स्ट टेंजेंट, सेकेंड टेंजेंट, देन डायमीटर रेडियस इज 0.655, 4.655, then trim. Modify command, go trim, select all, in other way we make this with the help of array command and tangent. Draw command, go to the array, start and radius, first write TA and tan, and again write TA and tan. Now I select wrong side. If we select first, this is a start and this is a end. I select this, then again repeat, or start end. Write tan, again write tan, अभी हमने इस साइड को सिलेक्ट कर लिया, यहां सिलेक्ट करना था तभी वो बन पाता। ये देखिए इस साइड को सिलेक्ट कर दिया। अगर हम रेडियस दे देंगे 4.65, नहीं कट हो पाएगा क्योंकि उसने इस पॉइंट को टेंजेंट उठा लिया। हमें इस तरफ टेंजेंट लेना था, इसलिए ये भी ध्यान रखना है कि टेंजेंट हम कहां ले रहे हैं, कहां नहीं ले रहे। ये उठा देंगे, आग से बनेगा। आग से बन जाएगा, बट ये उठा नहीं रहा, ये हमारा जो सिस्टम है ना। या फिर एक आर्क बना के उसको हम इसके साथ मूव करा सकते हैं। अभी हम इसके बाद इसको अगली इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। जब मूव कमांड कराऊंगा उसके बाद ये एक्सरसाइज आपको एक बार फिर रिपीट करके दिखाऊंगा। अभी इसमें कोई इसको बंद करके फिर चलाना पड़ेगा। इसके ये इस साइड को टेंजेंट नहीं उठा रहा,
Now we make this diagram with the help of array command. First we draw a circle. Pencil on. First we draw a circle of diameter 8. After that, we draw the lines with the help of first line we make with the help of quadrant. यहाँ से उठा लेंगे इस quadrant से उस तक बनाएंगे. Go snap, go setting, select all. This quadrant. Now we array. Number of line is 1, 2, 3, 4. Let's repeat now. Then we trim this line and array the all 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Draw a line with quadrant and center point. Then go to the polar array. Select the line. Enter. Select the base point. Number of item is 10. Enter. Accept. Check the fill angle 360. Enter and accept. Now after that, here the circle is 2 from the center distance and the radius is 0.5. C, enter. Again use from command at the rate. First we take base point, then at the rate 0, 2, and the its radius is 0.5. Radius आया 0.5. Similarly, we make one circle here, radius of 0.5. Radius is 0.5. Now use array command. First we trim, then array. Now go to the polar array, modify. Select this and this. Enter. Select base point. First check the number of items. The number of items are similar, 6.
select the center point, change the number of item. सर आपने जो 10 की लाइंस की वो बनाई ना, हाँ वो जी। 12 थी एक्चुअली, तो इसलिए वो उस पे नहीं था। कोई बात नहीं। 6 चेंज करने की take a line again, array, number of lines here, अच्छा ये गिनी नहीं थी हमने पहले, 12 थी। select object, base point, item goes to 12 and accept. Now we use trim command, tr, enter, select all. Now next, going to the next exercise. This exercise, in this exercise first we make circle, then again like from command, use a from command or offset. Select all, E enter to erase. The dia of first circle is, take, this is a reference first 0.75. After that we make other circles. Then the radius is 0.75. After that, the outer circle dia is, sorry, radius is 1.25. 1.25. Make two circle with the distances from this point is 2.75. First go to the circle command, then from, specify the base point, go in negative direction, add the rate, distance is 2.75, in x 0, sorry, in x minus 2.75, comma, in y 0, enter. First radius is 1.25. Now take second circle and the radius is 0.75. Check.
2.75 and the distance is 2.75. Okay. After that, we make a circle of radius 1.25 with tangent radius. Go to the draw command, go to the circle command, go to the tangent radius, first tangent, second tangent, the radius is 1.25. Similar fashion, we make circle downward. So if we do this way, circle is down, we drain that. And can we then offset the remaining part in the downward direction? Again, the same thing. It's not going to be offsets. It's going to. As a circle. It's going to be a mirror command से कर सकते हैं आप. जब हम सर्कल तोड़ देंगे हाँ जी. तो आर्क बच जाएगी. हाँ जी, हाँ जी. फिर भी वो उसके ऊपर या नीचे बनाएगा. हाँ जी, हाँ जी. अब हम ट्रिम कर देंगे इसके बाद. मॉडिफाई, ट्रिम, सेलेक्ट ऑल, इसको कर दिया, इसको सिमिलर फैशन. क्या चीज करनी है अब इसको? ऑफसेट उसको आर्क को नीचे. अगर नीचे ऑफसेट आर्क करोगे तो ये आर्क ही होगा. ये देखो ऑफसेट, हम ऑफसेट कर रहे हैं 1 का. सेलेक्ट, ये ऊपर भी हो जाएगा. अभी यहाँ सर ने क्वेश्चन पूछा था, अगर हम एक आर्क को ट्रिम कर देते हैं तो उसका ऑफसेट क्या सर्कल होगा या आर्क होगा? उसका ऑफसेट आर्क ही होगा. जैसे अभी हमने ऑफसेट कमांड यूज करके देखा, ओ एंटर, हमने डिस्टेंस ले लिया 0.5 और इस आर्क को सिलेक्ट किया तो ये 0.5 का ही ऑफसेट कर रहा है. Now again come to our drawing. इसको डिलीट कर देते हैं हम. उसके बाद ट्रिम कमांड से इन दोनों को ट्रिम कर देते हैं. TR एंटर, सेलेक्ट ऑल. अब एक सेंटर में लाइन लगाएंगे, फिर उसको ऑफसेट कर देते हैं. ये सेंटर में एक लाइन लगाई. अब इसको ऑफसेट करेंगे. द डिस्टेंस इज 0.5, तो 0.25 इस डायरेक्शन हो जाएगी, 0.25 ऊपर की तरफ हो जाएगी. ओ एंटर, 0.25 एंटर. हमने सिलेक्ट करके एक ऊपर कर ली ऑफसेट, एक नीचे. अब इसको ट्रिम कर देंगे. TR, अब इन कॉर्नर को हम डायग्राम में देखते हैं, वो कर्व हैं, तो इसके लिए हम यूज करेंगे फिलेट कमांड. F एंटर. द रेडियस ऑफ द फिलेट इज 0.5. नाउ गो टू द रेडियस, द dimension is 0.5. एंटर. देन गो द मल्टी, select this. Similarly, now after that, इसके बाद हम एक सर्कल लेते हैं, 2 पॉइंट सर्कल. इसका एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये, दोनों क्वाड्रेंट से उठ जाएगा.
गो टू द सर्कल कमांड, इसको सिलेक्ट किया, पहले 2 पॉइंट सर्कल लिया, फिर इस पॉइंट को लिया और इस पॉइंट को ले लिया। उसके बाद इसको ड्रैग करके यहां तक ले गए, ये लाइन कंप्लीट कर दी यहां तक, क्वाड्रेंट तक। और अब इसका ऑफसेट ले लेंगे, इसका ऑफसेट होगा 1.85। ओ एंटर, 1.85 enter, select this line, make offset one side. Now go to the arc, again make a arc start end radius. स्टार्ट एंड रेडियस, पहले मैंने स्टार्ट पॉइंट लिया फिर एंड पॉइंट, अब इसका रेडियस, रेडियस कितना है, रेडियस इज 7.5। and after that we use trim command to trim this, tr enter, select all, select this line and delete. Then go to the array command, in polar way, polar fashion, or we can use mirror command. Select object, select base point, now number of item is 2 and enter to accept. Then we use trim command again, trim it. Now we have only a one circle left behind here center. Select the midpoint and the dia of the circle is 0.125. 0.125. अभी आपने इस एक्सरसाइज को अपने एंड पर रिपीट करना है। हाँ जी, हाँ जी, अगर आगे एक्सरसाइज करो 52 हो गए, ठीक है, 52 हो गए, मुझे मत कर, ये 350 है, 12 हो गया, 50 हो 50। एनी डिफिकल्टीज पूछ लेते हैं ना। हाँ, मैम